ஜக்கி வாசுதேவ் என்ன கிழிச்சான். ஜக்கி வாசுதேவுக்கு பேசுறதுக்கு என்ன தகுதி? சுய விளம்பரத்துக்காகவும் அரசியலுக்காகவும் இவங்களோட சுய முக்கியத்துவம், இவங்கெல்லாம் ஒட்டுண்ணிகள், இவங்கெல்லாம் லீச்சஸ், இவங்கெல்லாம் பாரசைட்ஸ். அதாவது மதத்தையும் இறைவனையும் வைத்து முன்னேறத்துக்காக பேசுற பாரசைட்ஸ். அதே சமயத்தில் மத நல்லிணக்கத்தை உடைக்கிறதுக்காக பேசுற. நான் சொல்றேன், சிஏஜி ரிப்போர்ட்ல ஜக்கி வாசுதேவோட ஈஷா ஃபவுண்டேஷன் வனத்துறை நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பு செய்திருக்குன்னு மத்திய தணிக்கை குழு அறிக்கையில் இருக்கிறது. நாங்க எதுவுமே பண்ணல. தணிக்கை குழு அறிக்கையில் இருக்கிறது. நான் என்ன பண்ணிட்டோம், உங்களுக்கு நான் கட் பண்ணி எக்ஸப்ட் அனுப்புறேன். தணிக்கை குழு அறிக்கையில் இருக்குது. தணிக்கை குழு தமிழ்நாடு தணிக்கை குழு கிடையாது, மத்திய தணிக்கை குழு. What am I to do? Will I believe the central audit or will I believe a crook and a charlatan who has done so many vile things? In this video clip, Dr. Palanivel Tyagarajan said that Jaggi Vasudev is a charlatan. There are many reasons why Dr. Palanivel Tyagarajan used the word charlatan for Jaggi. One of them is that Jaggi Vasudev has a long list of criminal cases. It starts with the mysterious death of Jaggi Vasudev's wife. There is circumstantial evidence linking Jaggi Vasudev to the death of his wife. For example, the fact that Jaggi Vasudev burned his wife's body before the arrival of his wife's family for the funeral. ஜக்கி ஒரு ஈஷா ஃபவுண்டேஷன் ஒரு டாக்குமெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு. ஃபேக்ட் வெர்சஸ் ஃபிக்ஷன், ஸ்லாண்டர் அப்படி ஏதோ ஒன்று. இந்த மாதிரி எங்கள் மேலே இவ்வளோ குற்றச்சாட்டு போடுறாங்க, ஒன்றுக்கு பதில் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப முக்கியமான பதில் ஒன்று, அவங்க மனைவி மரணத்துக்கு பின்னாடி இருந்ததுக்கு ஒரு பதில் கொடுக்குறாரு ஐயா. அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, 2000 பேருக்கு கண்ணுக்கு முன்னாடி அந்த எரிச்சாங்களா, அந்த பிணத்தை எரிச்சாங்களா. ஜக்கி இது மட்டும் உண்மையாக இருந்தது வச்சுக்கோ, இப்போ நான் சொல்கிறேன், ஒன்று சேலஞ்ச் பண்ணுறேன் ஈஷா ஃபவுண்டேஷனை. 2000 பேருக்கு முன்னாடி மட்டும் நீங்கள் இந்த கிரிமேஷன் நடத்தினு இருந்தீங்கன்னா, நான் ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்டை டிலீட் பண்ணி இனிமேட்டு எந்த ஒரு சமூக அக்கறை எடுத்து எந்த ஒரு காரியத்தில் வரமாட்டேன். நீ மூஞ்சி பார்க்க மாட்டீங்க. நீங்கள் பொண்டாட்டி ஒரு செத்து போயிருக்கா, என்ன மாதிரியா போய் பேசிகிட்டு இருக்கா அந்த ஒரு பொம்பளையை வச்சுக்கிட்டு. இவ்வளோ கூட மரியாதை இல்லை, இறந்து போனவங்க மேலே இவ்வளோ கூட மரியாதை இல்லை உங்களுக்கு. அவங்கள வச்சு போய் பேசுவீங்களா? நான் ஜன்மங்களாட நீங்களாம் இதுக்கு மொட்டை அடிச்சுட்டு நாமத்தை போட்டு பட்டையை போட்டு ராஸ்கல்ஸ் ஆஃப் த தேர்ட் ஆர்டர். நீங்கள் எப்பேற்பட்ட ஆளுங்களாக இருப்பீங்க? 4:30 மணி 5 மணிக்கு எரிச்சிட்டிங்க. சூரிய உதயம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எரிக்கணுன்ட்டு எரிச்சிருக்கீங்க. அவங்க அப்பா மூஞ்சி பார்க்கல. அவங்க அப்பா, அவங்க அக்கா, 2 அக்கா. அந்த அக்கா குத்தலை ஒன்று ஜக்கி எடுத்து ஓங்கி அற விடல, மூக்கிலே குத்தலை, மூக்கிலே வைக்கல. சொல்லு பார்க்கலாம். 2 அக்கா, அவங்க வீட்டுக்காரங்க, அப்பா, 14 பேர் டெம்போ வேனில் வந்தாங்க. வந்து பார்க்குறாங்க, நீ அதுக்குள்ளே எரித்து புனைய சாம்பல் ஆக்கிட்ட. 2000 பேர் முன்னாடி எரிச்சாங்களா? ஃபோட்டோ காட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி கேமராலாம் வச்சுருந்தல, நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல. இறந்த அன்றைக்கி அந்த ஃபோட்டோஸ் எடு, வெளியே ரிலீஸ் பண்ணு. 2000 பேர் இருந்தாங்களா ஃபியூனரலில் பார்ப்போம் நம்ம. சூரிய உதயம் ஆகிறதுக்கே வெயிட் பண்ணல. 2வது, உங்கள் ஜாதியில், இந்த விஜிமா ஜாதியில் 2 இடத்துலையுமே இந்த பழக்கமே இல்லை. புதைக்கிற பழக்கம் தான் இருக்குது உங்களுக்கு. எதுக்கு எரிச்சிங்க? அப்புறம் மகா சமாதி அடைகிறவங்க யார் எரிச்சிருக்காங்க? இது வரைக்கும் ஜீவ சமாதி ஆனவங்கள புதைச்சிருக்காங்க. அதே சிட்டிங் பொசிஷனில் வச்சு புதைச்சிருக்காங்க. முட்டாளாக்குறிய ஊரை. There are many video clips on YouTube in Tamil and Hindi languages exposing Jaggi Vasudev's lies regarding the death of his wife. Please see the links to these clips in the description below. Jaggi Vasudev is also known for illegal land grab crimes. His ashram is built on forest reserves. Jaggi Vasudev illegally built his ashram against the environmental rules of the state. The land where the ashram is built was the habitat of the elephants. The statue of Isha Foundation is illegally built on the property of a tribal woman named Muthama. I'm Anjali Gopalan with the NAS Foundation, which is an HIV/AIDS service organization. Sadhguru, recently I have read about Muthama, this really poor tribal woman
who's taken on the Isha Foundation to get back her land, which she claims Isha Foundation has usurped, and the land for over 400 other tribal families. Is there any chance that the Isha Foundation would return that land to the tribal people? If I had it, I would have. But the Isha Foundation has, and there's documented evidence. No. There are many crimes that Jaggi Vasudev has done, and the corrupt Indian officials have been providing protection for Jaggi Vasudev. Jaggi Vasudev is also accused by court systems of Tamil Nadu and Karnataka of illegally collecting money for environmental activities. These are no speculations. These are legal cases that are going on in South India, where Jaggi's ashram is. There are many videos in Tamil and Hindi languages proving that Jaggi Vasudev is a charlatan. There are several videos by magistrates and high court justice, etc., that show that Jaggi Vasudev has violated the laws of South India. One more reason why Dr. Palanivel Tyagarajan says that Jaggi Vasudev is a charlatan is because Dr. Palanivel Tyagarajan also knows that Jaggi Vasudev has no traditional education to represent himself as Sadhguru. Jaggi Vasudev does not come from such Shaiva or Shakta lineages. Jaggi's claims on yoga or tantra, etc., are unfounded claims. Jaggi Vasudev says so in his own video clips. I'm completely spiritually uneducated. The most profound stuff that I read is asterisks. Is what? Asterisk. Asterisk comics, yeah. That's the way I am, that's the only thing I know, which is 100% energy work. No other things, no mantras, no tantras, no nothing. I had to admit that I have not read the Gita. So, this eye business and all, you reading bits and pieces of Vedanta, please stop that. Jaggi Vasudev came to popularity just by repackaging and parroting the teachings of Bhagavan Shanmuka, who is also known as Palaniswami. Jaggi Vasudev has flicked the concept of Indian philosophy out of the two books written by Bhagavan Shanmuka, and this is used by Jaggi to build his popularity as a guru. These books have been written in English, and Jaggi Vasudev flicked the information easily. Bhagavan Shanmuka, who is also known as Palaniswami, extracted this information from studying the original Sanskrit materials. Jaggi has no knowledge of Sanskrit, and he has no way of extracting this information from the original literature. Jaggi Vasudev is not part of any authentic lineage. I have never studied any spirituality, if you don't believe this. I've never made a study of anything. I have not studied with anybody. Nor has Jaggi Vasudev the language skills, i.e. Sanskrit, Tamil, Hindi, to extract this original information. I have always avoided learning Sanskrit language. Then you learn a little bit of Hindi then. No, you won't. You want? No. இப்போ நான் பாருங்க தமிழ் பேசுகிறேன், தமிழ் மாதிரியே இருக்குது இது. புரியுது ஏதோ ஓரளவுக்கு, ஆனால் தமிழ்னு சொல்ல முடியாது நான் பேசுறது, தமிழ் மாதிரி ஏதோ ஒன்று பேசிக்கிறேன். Jaggi Vasudev cannot access books in Sanskrit or Tamil languages. With Jaggi's level of Tamil, he cannot access the level of information he speaks on. This clearly proves that Jaggi Vasudev flicks the information from the books and lecture notes of Bhagavan Shanmuka, who is also known as Palaniswami. The books were published as early as in 2001. Indeed, Jaggi Vasudev's video clips are fashioned to attract innocent people as followers. Jaggi took many interesting concepts from Bhagavan Shanmuka, who is also known as Palaniswami, and presented them in a tabloid newspaper fashion to get himself popular. In this clip, you can see Jaggi Vasudev is saying that he doesn't know any tantra, any mantra, etc. That's the way I am, that's the only thing I know, which is 100% energy work.
no other things, no mantras, no tantras, no nothing. It is for all these reasons that Dr. Palanivel Tyagarajan called Jaggi Vasudev the charlatan. I'm completely spiritually uneducated. I have to admit that I have neither read the Gita, nor the Vedas, nor the Upanishads, nor even the Yoga Sutra. I've never studied anything. In this clip, in the year 2015, at the age of 58, Jaggi Vasudev publicly stated that he is completely spiritually uneducated, that he neither read the Gita, nor the Vedas, nor the Upanishads, not even the Yoga Sutra, that he never studied anything. That is a Jaggi's statement at the age of 58. These are the reasons why we are saying that Jaggi flicked all the concepts of spirituality from Bhagavan Shanmuka's books and lecture notes. We also know that Jaggi Vasudev has bought the lecture notes containing the interesting concepts on Indian spirituality of Bhagavan Shanmuka, who is also known as Palaniswami, from a couple of American guys who were expelled from Bhagavan Shanmuka's ashram in Goa. Not only Dr. Palanivel Tyagarajan has addressed Jaggi Vasudev as a charlatan, many other prominent people exposed Jaggi's lack of integrity. Dr. Shiva Yadurai, a prominent scientist and a politician, addressed Jaggi Vasudev as a money-making machine, implying that Jaggi Vasudev does not represent the spiritual practices of India. In March of 2020, I was the only guy as a scientist who said this fear-mongering, March of 2020 will go down in history as the biggest fear-mongering hoax intended to suppress dissent, destroy economies, and push mandated medicine. No other guru in India said that. They were just watching to see if they want to. Sadhguru, he didn't say anything. That guy's a money-making machine. Now he's saying something. Watches which way the wind blows. We need to look at leaders. What leaders do we actually have? Do our leaders say the right thing at the right time? Sadhguru's not a leader. He's a money-making machine, okay? That's what he is. In the following clip, Mr. Vinod Dua gives a short summary of Jaggi's land grab crimes. आजकल जो एक आध्यात्मिक गुरु हैं, आजकल उनका बोलबाला चल रहा है. उनका नाम है सदगुरु जग्गी वासुदेव. ईशा फाउंडेशन इनकी कंपनी तो नहीं कहूँगा, इनकी संस्था का नाम है, लेकिन जो काम है वो कंपनियों जैसे ही होते हैं. आजकल ये जयपुर में हैं, प्रमोट कर रहे हैं, रैली फॉर रिवर्स कर रहे हैं कि हमारी नदियाँ जो हैं उनको साफ़ सुथरा किया जाए, उनका ध्यान रखा जाए. इसके लिए जगह जगह ये जाकर हर राज्य के मुख्यमंत्री को साथ लेकर यात्रा करते हैं. इसकी शुरुआत हुई थी 3 सितंबर को इस रैली की, और हर्षवर्धन जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था. एक तरफ पर्यावरण को बचाने की बात हो रही है, नदी को बचाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ इन पर अपना ही जो आश्रम है कोयम्बतूर के नज़दीक, उसको लेकर केस चल रहे हैं कि उन्होंने बिल्डिंग्स जो बनती वहाँ पर बनाई हैं, गैर कानूनी बिल्डिंग्स हैं. ज़मीन पर जो इनके पास है 44 एकड़ की, वो दरअसल आदिवासियों की ज़मीन है. और जो ये बना रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधान सेवक भी वहाँ गए थे, आदि शिवा की बहुत बड़ी मूर्ति, उसका उद्घाटन करने के लिए. तो केस ये चल रहा है कि जो पर्यावरण है वो बिगड़ा है इससे. ये गैर कानूनी काम इन्होंने किया है क्योंकि वो एलिफेंट कॉरिडोर है उस जंगल में. उस जंगल की अपनी कहानी है. एक महिला है मुथम्मा, वो लड़ रही हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव से. कहाँ सदगुरु जग्गी वासुदेव जिनके आयोजन में प्रधान सेवक खुद जाते हो, कहाँ एक गरीब आदिवासी औरत जो दिन में 50 रुपये कमाती हो. बहरहाल वो केस लड़ रही है कि ये जो ज़मीन है, ये भूदान जब चल रहा था विनोबा भावे का, तो तब के एक ज़मींदार ने 44 एकड़ ज़मीन 13 परिवारों को दे दी थी. 13 आदिवासी परिवारों को पट्टा उनके नाम कर दिया था. पट्टा तो उनको दे दिया गया, लेकिन ज़मीन का पोजीशन जो होता है, मिल्कियत जो होती है, वो मिल्कियत इनकी है, लेकिन जो पोजीशन होता है, कब्ज़ा होता है, वो इनके पास नहीं आया.
ये गरीब लोग वहाँ काम करते थे, जंगलों में जाते थे, शिकाकाई, आंवला, दूसरी जड़ी बूटियाँ खोज के लाना, जो इनकी सदियों पुरानी जानकारी थी, आदिवासी कबीलों की जानकारी थी, उन चीज़ों के बारे में वो लाना, इससे इनकी रोज़ी रोटी चलती थी। धीरे धीरे सरकार के हाथ इन पर आने शुरू हुए, जंगल में जाना इनका बंद हो गया। तो आश्रम जो है ये जग्गी वासुदेव वाला, इसने इन आदिवासियों को शरण में ले लिया अपनी, और इनको भेजना शुरू किया, साथ में अपने लोग भेजने शुरू किए जंगल में। एक दफ़े जब आश्रम के लोगों ने ये विद्या जान ली, ये जानकारी हासिल कर ली, जो सदियों पुरानी आदिवासी जानकारी है कि कौन कौन सी जड़ी बूटी क्या क्या कर सकती है, इनको बाहर कर दिया गया। ये केस चल रहा है और हाई कोर्ट के एक जज हैं, उन्होंने भी इस केस में दखल दिया है। प्रधान सेवक से अपील की गई कि आप इसके उद्घाटन में मत जाइए क्योंकि यहाँ केस चल रहा है, लेकिन प्रधान सेवक गए। बहरहाल जग्गी वासुदेव के जो अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, उनका कहना है कि जग्गी वासुदेव एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु हैं जिनके दामन पर कोई दाग नहीं है। ये जो हमने आपको कहानी सुनाई है, ये इसलिए सुनाई है कि ये जो 44 एकड़ ज़मीन है जिस पर आदि शिवा की मूर्ति बनाई है, जिसका उद्घाटन प्रधान सेवक ने किया है, इसके लेकर विवाद जारी है, केस चल रहा है। और दूसरी तरफ ये नदियों की भिलाई की बात हो रही है। तो बहुत से लोगों का मानना है कि जहाँ जहाँ नदियों का जिक्र हो रहा है, जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं, वहाँ पर ज़मीन का भी कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। There are many more other prominent people that expose Jaggi's unlawful deeds.